Hello. Shit. हाय एवरीवन। ये मेरी एक अटेम्प्ट है थोड़ा स्पॉन्टेनियस होने की, क्योंकि अभी कुछ हुआ था और मैंने सोचा कि आज मुझे कुछ रिकॉर्ड करना था, बट आई वाज लाइक कि ये व्हाइल द सेटअप इज हाफ वे हियर, लेट्स हैव दिस डिस्कशन। क्योंकि काफ़ी अरसे से लोग जब मुझसे पूछते हैं कि यार आप क्रिकेट देख रहे हैं, क्या ये मैच देखा, वो मैच देखा, क्या सोच रहे हैं ये बना, तो मेरे पास बहुत सारे रीज़न्स होते हैं टू टॉक अबाउट मैं क्यों नहीं देखता क्रिकेट। अम, जिसमें से है कि भाई हाइब्रिड टूर्नामेंट्स जैसी किस्म की हरकतें जो किसी और स्पोर्ट्स में नहीं होती हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट को शन किया जा रहा है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को, या फिर पाकिस्तानी क्रिकेट की अपनी नेवर एंडिंग टॉक्सिसिटी, द फैक्ट कि मैं लाइक आई वर्क इन इट, आई नो पीपल हु वर्क इन इट एंड दैट कॉम्प्लिकेट्स दैट रिलेशनशिप एज अ फैन, ब्ला 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 ब्ला। आई हैव अ लॉट ऑफ रीजंस एंड मतलब ये रीजंस वैलिड हैं, कोई इसमें झूठी बात नहीं कर रहा होता मैं, बट आई थिंक एक चीज़ के बारे में बहुत कम एक्सेप्ट मैं करता हूँ कि मैं क्यों नहीं देख रहा आजकल, क्योंकि एक लेवल पे मेरी भटती भी है, क्योंकि लाइक पाकिस्तान क्रिकेट से ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ मतलब मुझे डायग्नोस भी हुआ था जन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और लाइक उस ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ आप पाकिस्तान क्रिकेट जैसी चीज़ में आप पढ़ रहे हैं, लाइक आर यू क्रेजी? एंड आई थिंक जब तक ट्विटर को मैं बर्दाश्त कर सकता था, बिकॉज एज टॉक्सिक एंड हॉरिबल एज ट्विटर इज राइट नाउ, लाइक इट्स नॉट लाइक कि पहले कोई बड़ी बेड ऑफ रोजेस था, बट उस वक्त मुझसे हैंडल होता था, तो उसकी सबसे अच्छा फ़ायदा यही था कि आप अपना एंग्विश वहाँ एक्सप्रेस करें, और उसकी एक हद तक आपको क्या कहते हैं, लाइक यू गेट अ लॉट ऑफ वो फॉर इट, reward for it, like a lot of a lot of validation for it. और आई थिंक इसलिए पाकिस्तानी क्रिकेट फैंडम ट्विटर पे हमेशा से इतनी मशहूर रही है, बिकॉज वो एक बड़ा इट्स सच अ पावरफुल म्यूज। और मैंने क्या कहते हैं इसलिए लाइक वन थिंग दैट मेक्स इट रियली हार्ड टू वॉच दिस इज दैट is कि जब ट्विटर मैं नहीं यूज़ कर रहा होता हूँ, सो दैट दैट एनर्जी, दैट टेंशन एंड एवरीथिंग वो भी नहीं यूज़ हो रही होती, एंड या कंबाइंड विद ऑल ऑफ दीज अदर रीजंस, आई डोंट वांट टू मेक लाइक ट्विटर इज द रीजन मैं क्रिकेट नहीं देखता। द रीजन इज कि मुझसे बिल्कुल भी ये टेंशन बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम it does feel like for me aaj abhi is what I'm like the fan of like this really problematic artist who has released like some festival gem jo maybe kam logon ne dekha hoga, but um it's a master class, right? Like, and obviously I'm talking about like the match that just happened, because मैंने नहीं देखा वो match, so let's get that out of the way first, right? Like I did not watch it, um and I'm glad I didn't watch it because मुझे उसका ऑलरेडी एक आइडिया हो रहा था पहले मैसेजेस आना शुरू हुए, राइट? लाइक सो like this is I'm talking about like the last hour or so, because prior to that बहुत अरसे से the match was not like it was okay, but Pakistan's pretty like had a good chance for most of it, I would say, whatever. तो उस पे कोई कमेंट मुझे नहीं आया, मैंने नहीं देखी, मगर फिर मेरे कायद सिली टेडी ने ही बात शुरू की कि कहा कि यहाँ से हम कैसे इसको फक अप करेंगे। एंड उसके बाद से सब कुछ जो हुआ है ना, तो एंड में मैं द रीज़न लाइक आई एम डूइंग दिस लाइव राइट नाउ इज़ बिकॉज़ आई वाज़ थिंकिंग कि वाओ! लाइक ये 4 पिछली जो एपिसोड्स हैं बट्टा फास्ट की, it feels like this match is a callback to like most of them. क्योंकि one thing जो मुझे याद है, first thing I was actually tagged in was कि जब बाबर आउट हुआ, तो the cricket for commentary noted, and several people had said this to me since the tape ball episode, कि actually what you said about शाहिद आफरीदी कि उसकी जब वो आउट होता था क्राउड लोग छोड़ के चले जाते थे, तो वो बाबर के साथ अभी हो रहा है आजकल, and that happened in Faisalabad, and
Someone sent me a screenshot of that, and I was like, okay, fair enough, stand corrected on that. So that was one kind of callback I noted. And then obviously that whole thing about like the Pakistanis and bowling and bowlers saving the day, etc., etc. Um, but I think जो सबसे बड़ा call back था जो पहली episode थी Theseus ship, right, where I was talking about like it's the same match over and over again. Like I feel that उसका क्या मतलब superb representation थी ये match, right? Like it felt so validating. Okay, it feels like, if you're a critic, so the art is reacting to you or kind of saying to you, yes, tum sahi ho, bro. Because look at this match. Like, I was like, okay, let's count all the tropes that happened in this. So, कि वो चीज़ें you can recognize from before. Um, एक तो कि आपका एक नया कप्तान है और पाकिस्तान में हमेशा से होता है कि जब कोई कैप्टन बनता है तो एकदम से वो उस लेवल पे अपनी क्रिकेट उनकी क्रिकेट खेलने में कोई चेंज बहुत ज़्यादा ही आ जाते हैं एंड यूजुअली द परफॉर्मेंस गेट्स अ लॉट बेटर दैट यू कैन शो थ्रू द स्टैटिस्टिक्स एज वेल and so again Tiddy was who messaged saying like Shaheen captain ban gaya ab slog nahi kar raha is trying to play smartly which is that's one trope उसके अलावा कि वही जो मैंने जिसका ज़िक्र किया कि स्टार प्लेयर आउट हुआ तो लोग मैदान छोड़ के चले गए, another big Pakistan cricket trope. A great one was that somebody messaged saying कि मैं जब भी मैच देख रहा हूँ तो the required rate is refusing to go below run a ball, even though there was like two really long partnerships and एक वैसे भी बहुत एक बड़ी मॉडर्न क्रिकेट में अब काफ़ी अरसे से बिलीफ है कि जब एक दफ़ा मैनेजेबल हो जाए सो लाइक इन गॉट विकेट्स इन हैंड जस्ट लाइक किल इट क्विकली डोंट इट्स ओनली अगर बहुत बड़ी चीज़ है तो देन ओके यू कैन ड्रैग इट आउट और व्हाटएवर बट लाइक यू कैन किल इट क्विकली एनीवेज पाकिस्तान क्रिकेट obviously is not going to do that like as a storyteller as a director as a whatever artist of whatever Pakistan cricket because गेम ही यही है और ये मैं जो आज वाली एपिसोड है उसी में तफसील में डिस्कस करना चाहता है कि आपको कितना वो तड़पा सकते हैं और कितनी मतलब आपका वो टेंशन जो है अनबेरेबल लेवल की हॉरर मूवी लेवल की वो किस तरीके से आपको खेल के ले जाएंगे एंड the fact that it's predictable doesn't change it. It makes it more enriching because so just like I already messaged saying that on the group, but like when I was checking the score on Cricinfo, तो उस पे भी बातें शुरू हो गई थी like somebody had said कि Pakistan team is like the team that'll be up 3-0 and lose 4-3 और किसी ने पता नहीं South African ने कहा था कि 30 needed of 30 still with 6 wickets in hand still gives me nightmares which I guess yes that was the only final you guys had played for the men's side but mm, like come on dude it's Pakistan versus South Africa like um and that proof was given by Imran had message 2007 May my friend Imran you should know who he is he's been on the show 2007 May Pakistan South Africa fifth deciding I don't know deciding but fifth one day in Lahore Pakistan is chasing a tiny score and they lose 6 wickets for 20 runs, I think, and lose the match. With like, sub 250 target or something like that. And लग रहा था कि लग क्या रहा था वो collapse end तक चलता गया like and you could see that everywhere and like so messages जो मुझे मिल रहे थे मगर even Cricinfo की comments में थे and I'm मीडिया वगैरह हर जगह पे थे और ये यही मैं शुरू में आप लोग से बात कर रहा था ना कि ये जो थीसिस शिप वाली एपिसोड की थी कि एक एट सम लेवल लाइक दिस इज an, an artist at work because the fact that you can also guess it makes it more exciting and कि वो किसी भी सिचुएशन को टेंस बना देना उसमें सस्पेंस लाना राइट लाइक अभी आप यूट्यूब पे जाएं तो बहुत सारी लाइक व्हाई टैरेंटिनो इज द मास्टर ऑफ सस्पेंस टाइप वीडियोस हैं एंड लाइक आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ ऑल ऑफ देम लाइक अ लॉट ऑफ देम विल एक्सप्लेन टू यू कि आप एक डायरेक्टर एक सीन के अंदर टेंशन को कैसे खींचता है right and what are the cliches where people are like come on dude like this is so stupid but like
with really great, again, you can find that boundary where you can even do the trope and still make it something that people enjoy. और क्योंकि उसकी मिसाल यही है, क्योंकि हम सबको पता था, जो भी देख रहा था, जो भी मैसेजेस भेज रहा था कि पाकिस्तान ने यही करना है, इसी तरीके से दो रुला के जाएगा। और what should have been a simple chase was made super exciting, super tense, and that's what people are signing up for, really. So, anyways, this is it. I'm not gonna run any longer on this. New longer episode will also be out soon. Thank you for watching. Bye bye.